Actually, आप तो इंडिया में हो. It's 8 p.m. Over here it's 10:30 a.m. अभी दिन शुरू हुआ है. You can say. Haven't even साडा got. भी शुरू होया है जी, कोई गल नहीं. Uh, आई एम एन इवनिंग पर्सन. yeah, like me. So मैं सबको कहना चाहती हूँ नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण, good morning, good afternoon, good evening. So depending on where you are, it covers everyone. And I'm so happy that some of our friends have joined. And I'm so happy to have Anuji with me today from New Delhi, India. And I have to thank Rajshri, who's a common friend. We met a couple of months ago, and she's been wonderful. And she's been, introducing me to a lot of different people from India, which I'm very happy about. Because I'm from there. Of course, Delhi में काफ़ी देर होगी मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आती जाती रहती थी. अब मैं थोड़ी देर के नहीं गई हूँ for a while. तो अनु जी की मैं क्या बताऊँ, इतनी मैं तो पढ़ के मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ. She's been 25 years in advertising, career in advertising for more than 25 years. And she's devoted her life to nurturing people into embodying their best selves. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? A visiting master at Ananda, visiting faculty at MBA institutes, speaker at forums like YPO, FICCI, a fellow, Delhi University, and a published author and an artist with international publications and an artist with many solo art exhibitions to her name, multitude of TV appearances, featured writing in national and international publications and awards. She's coach and mentor to many. She interprets traditional wisdom in the modern context through her writings, paintings, and sharing through workshops and personal counseling sessions. She not only does tarot card, readings, but has herself created a self-help system of guidance and meditation cards based on her paintings of Hindu gods and goddesses, and written a book of interpretation for the same. Her message is very simple. The outer world is a reflection of our inner state, and it takes deep inner work to bring about harmony and well-being in our lives. She facilitates and supports this inner work through various systems and processes from yogic asanas and I can't pronounce the word properly, pranayams, mantra chantings, neuro-linguistic programming techniques, healing meditations, journaling, and techniques of affirmations and gratitude and much more. Wow, such a mouthful. I couldn't pronounce them properly, but I'm sorry about that. But so much, I can't believe that you could do so much. And especially I'm also interested in this tarot card. कैसे आप करते हो with the Hindu gods and goddesses के साथ, that's very interesting to know. And the outer world is a reflection of our inner state, and it takes a deep inner work to bring about harmony and well-being in our lives. So इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे. Before we do that, I just want to say wish everybody actually Independence Day is tomorrow in the USA. We live here. A lot of us have moved to this country. Of course, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पे हम, we are born in India, we have a lot of love for India, we do a lot of celebrations for India. But when you moved here for so many years, the kids are born here, so we've become American citizens as well. So we have to have a lot of feelings and affection for this country, which I do a lot, because it's given us so much that I can't even imagine that we got so much from this place. We brought a lot of knowledge and everything, expertise, knowledge, and our upbringing from India, and we brought it here, incorporate Kia. So we are a mixture of both. So this country is, like I said, is a very important part of our life, and I want to wish happy Independence Day to this country. And as everybody knows, on July 4th, 1776 was declared. That was the date that USA became independent from the British. And the British was also ruling India for a long time. So we have that thing in common with them. And the founding father delegates of the Second Continental Congress declared that the 13 colonies were no longer subject and subordinate to the monarch of Britain, King George III, and were now united, free, and independent states. The Congress voted to approve Independence Day by passing the Lee Resolution on July 2nd and adopted the Declaration of Independence 2 days later
on July 4th. So that's going to be tomorrow. So, and also just want to say from my side is that my grandson was born 2 months ago. So today he's happy 2 months to him, birthday, 2 months birthday to him. While love a lot. My little baby, yeah, my grandson is really cutie. So, and आप अब इतने बोल के आप अब आपको चांस मिलेगा बोलने का, and I want to hear a lot of things from you, all these things that you just said. Thank you, thank you. We like to hear from you, and we're so happy that you're here with us, Dil Diyan Gallan. Thank you. Namaskar. Jai Shri Ram. Jai Krishna. Hello to everybody. So independence is a theme in India also today because it is a different kind of independence. It's Guru Purnima today, the one who liberates us. जिसके गुरु कृपा से हम मोक्ष पाते हैं. तो अलग तरह की इंडिपेंडेंस है वो. Independence from the cycle of life and death. Sorry. No worries, no worries. I'm trying to get back to my thing that I can, no, let me create this thing. And I will close this so that we don't have any, okay. Okay, ji. In fact, I thought I will recite a few shlokas from the Sri Guru Stotram because आज गुरु पूर्णिमा है और इस वक्त बाहर अभी मैं जा नहीं पाई पर चांद पूरी अपनी ग्लोरी में होगा. So is that okay? I recite a few shlokas. Yes, please do. Yes, okay. Definitely. And I forgot to mention, that was another thing I was going to say, Guru Purnima, and Yes. I left it so to you. Independence ka theme hi hai, wahi I know. to say, in fact, this is the ultimate independence, the ultimate liberation. Exactly. Yes. Akhand mandalakaram vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. So I said गुरु पूर्णिमा पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो थोड़ा मंत्र भी उनके लिए चैंट कर दें. No, very good to hear that. So it's every year during this time, June, July में होता है ना celebration? हाँ जी. So जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, that is the गुरु पूर्णिमा. So पंचांग के हिसाब से जब भी पढ़ते, इस बार अधिक मास है, so we will have चतुर्मास में we will have one extra month. And that one extra month चतुर्मास का जो एक अधिक मास है वो इस बार श्रावण का है. So we have 2 months of Shravan this time. तो इस normally लोग श्रावण के मंडेज को फास्टिंग करते हैं या कुछ स्पेसिफिक करते हैं, तो इस बार 4 की जगह 8 मिलेंगे, 8 या 9, I'm not sure, क्योंकि अधिक मास है श्रावण का. Wow. So this is very important time here. Anywhere actually, it's an important period for the earth. That's true. आप वहां जाके वहां के हो गए, पर अगर सनातन के प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स. हम यहाँ पे फिजिकली रहते हैं लेकिन born तो वहीं पर हुए हैं ना, so all those qualities and everything that we learned, those are still there. And यहाँ पर रहकर भी हम सब चीजें मनाते, you know, we celebrate everything and we कुछ सुबह से मुझे wish करना है. In fact, I feel कि अगर आप anchored हैं अपने वैल्यूज में, तो आप अगर बाहर जाते हैं तो शायद आप और ज्यादा उन रिचुअल से जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ वाले उतने नहीं जुड़ पाते हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस के कारण ना यू फील द नीड टू stay connected to it a lot more. Here we take a lot of things for granted. I noticed that when I go to India, things have modernized or changed, but we are back in, we are in the same, the way we came, उसी तरह से हम कर रहे हैं, you know. I have observed this for years actually. But I think in a way a kind of a renaissance is happening even within the metropolitan cities here in India, that people are
rediscovering their cultural heritage and reconnecting with the core values, because हर तरफ से सब कुछ करके धक्के खा के समझ में आया कि जो जीवन में जो एक शांति चाहिए, जीवन में जो ठहराव चाहिए, वो खाली ये फिजिकल को चेज करके नहीं मिलता है. That's true. बिल्कुल ठीक कहा आपने. You have to inner self. जैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कितने कितने चीजें आपने करी हैं, बुक्स भी लिखी हैं, पेंटिंग्स, ये यू नो, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस टू थिंग्स. आपने बहुत मुझे, आई मीन एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, बट दिस टैरोट थिंग मुझे बड़ी अमेजिंग लगी है, बिकॉज यू सेड डू दैट थ्रू द रीडिंग, यू नो, लाइक पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड उसका थोड़ा हमको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए एग्जैक्टली how you do that, and what is that connected? So you see, I'm not, while I'm not trained in art, I have been painting since childhood, and whatever is the theme of the period of one's life, no, one has painted that. When children were young, I painted Hulk for him, and I painted tattoos for him. So Okay. as I got into understanding Sanatan Dharma and started appreciating the wealth that we have of the Murti Puja and the various rituals, when I started discovering them, I started painting a lot of gods and goddesses. And I got exposed actually to tarot as a client to somebody. And she used to use the Greek gods ka card. And I found it, it was actually quite a eureka moment for me to discover that something like this was there. And I found it very intriguing. And I started exploring it myself and started doing readings for others. And then I realized that, you know, when I understood better how tarot works, I realized we all have these inner connections with our deities. You know, आप गणेश जी का नाम लो तो एक certain तरह की feeling आती है, आप माता लक्ष्मी का नाम लो एक अलग तरह की feeling आती है. So ये जो inner connections हमारे हैं, and the thoughts and emotions, the mention and the thought and the visualization of these deities evokes in us, actually helps us settle somewhere in our inner space. So I spoke to a friend of mine who's an Aghori sadhu, and I said, you know, Greek gods हैं, angels हैं, हमारे Indian gods के क्यों नहीं हैं? हम क्या वो हमें राह नहीं दिखा सकते? तो बिल्कुल दिखा सकते, मुझे तो महसूस होता है कि वो हमें राह दिखाते हैं. बोले तो फिर आप बना दीजिए. That was a great idea. So I said, why should I base it on tarot? So I created something called guidance cards using my paintings of Hindu gods and goddesses. But the system that I made is based on Vedanta. तो जो 4 पुरुषार्थ होते हैं वेदांत में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो उसके 4 सूट्स हैं. I'll just share with you the book. So this is the book. It's called Avirbhav. Okay. And it comes with a deck of cards. Okay. So it's a self-help set. I made it into a self-help set. So whatever I felt was, I wouldn't call shortcomings, but whatever I felt was probably, you know, if you go to a Vedic astrologer, for example, and the person tells you what lies ahead, they also give you some upchar, they also give you, you know, some solutions, which if you go to a tarot reader, you don't get any solutions. They might tell you what lies ahead, but they're not really able to facilitate how you can handle that, unless of course it's a very intuitive reader who's a very evolved person himself or herself, and they might counsel you, but there aren't any, koi usme upchar nahi batata hai. So what I did is, in this book, if you resonate with a certain card, then I have given some additional recommendations, which could be a meditation or a mantra chanting, or, you know, a certain kind of a pranayam or something specific. So it's all to do with, honestly, I think all of us have all the information within ourselves. It's about stilling ourselves and being able to access that. जो intuitive capacity होती है ना human beings की, वो बहुत phenomenal है. अगर एक ठहराव आ जाए तो हर कोई अपने आप को heal करके अपने जीवन को सुधार सकता है. So my effort was to create the self-help set wherein people can get the help through messages from the deities and an understanding of the life of those deities, of the stories of those deities. अब आप छोटी-छोटी बातें देखिए, अगर, you know, mother-son relationship जो माँ पार्वती और गणेश जी का है, जो भगवान कृष्ण और यशोदा मैया का है, right? Just understanding those dynamics, how much they can help deal with the mother-child relationship as we are, you know, as our children are growing up, as we were growing up. Because I remember
for me when I became more aware of the fact that the parents who are bringing me up are my foster parents and not my real parents. I mean, it's not that I did not know, I always knew, but when I became aware of it, then knowing of the story of Shri Krishna and Jashoda, that, Jashoda Maiya ka kitna unke jeevan mein, the kind of place she has, the fact that he's known as Jashoda Nandan, it was very reassuring for me to know that, the gods also had foster mothers, and they were so completely loved. Very interesting. This morning I was listening to something that Lord Krishna को उनके जो mother थी उन्होंने पूछा कि भाई I thought somebody was in the prison for 14. He said आपने मैं पहले जन्म में मैं राम था and आप मेरी stepmother थी, and then you took me away from my own mother. The way she suffered, the same way you will have to go through the same thing. Yeah, so the karmic. So that is the beauty of Sanatana Dharma. That even Bhagwan, when he comes in a human form and when he lives, he's not free of the cycle of karma. The karmic debts have to be paid. So it's amazing. I just read that this morning. अभी आज ही सुबह मैंने पढ़ा वो. It just कितना reassuring होता है ना जब कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं किसी चीज से और हमें लगता है. I remember as a woman going through some certain turmoil and getting very frustrated and a lot of angst about how could they say this to me, and I said, hello, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, तुम उनसे बड़ी हो, तुम उनसे ज्यादा समझदार हो, it's okay, शांत हो जाओ, right? So these kind of things. So this book that Avirbhav and the cards, which is it's a self-help set, is actually to bring our own understanding and the deepest part of us where some knowing already exists, to be able to access that, to still ourselves, to be able to reach that point from which even if the problem is happening, but you are no longer a roller coaster because you have become still from within. तो ये आपकी जो अभी दिखाई है आपने किताब, तो somebody मेरी one of our viewers is Kamlesh ji is asking कि ये can we buy the book and the cards कहाँ से ले सकते हैं, अगर यहाँ पे हम रहते हैं तो कैसे, is there any way that you can go on the website or something? Amazon.com पे था ये, but the courier charges were more than the charges of the book. No, but Amazon यहाँ पर अगर if you do it from here, Amazon यहाँ पे physically तो भेजना पड़ेगा ना, because the books are lying in Delhi, in India, in Delhi, right? They are in. Yeah, let Amazon do the work. So what can be done is, if there is somebody, because a friend of mine in Budapest, I'd done a session in Budapest once, so there were a lot of people who wanted the book. So they took a bunch of it, they collected, and somebody who was traveling carried the books for everybody, and they transferred the money to me. So something like can be done. If there is somebody traveling and there are people who are interested, a set of books can always be sent along with somebody, because there's always someone or the other traveling. So that's not an issue. That is true. Sushma ji is asking, Delhi, आप अभी आपने कहा था ना कैलाश कॉलोनी में है आप? हाँ जी, मैं कैलाश कॉलोनी में हूँ. पहले she was in RK GK1. S block of GK1, yes. I just told her that I was in R block. I used to live there for a while because my mom and dad, they used to live in RK1, Greater Kailash. So yeah, S block में थे, right, our neighbors that time, but I left a while. I can imagine, such a small world, no? Small, and I love the chances. Market जो थी मेरे को इतनी अच्छी लगती थी. I used to spend my whole day doing shopping there. Whole day. बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है. I can completely understand. मैं बताती हूँ, मुझे I used to go there and then सामान लेकर सड़क क्रॉस करने की मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो मैं स्कूटर को रुकाती थी. मैं कहा लिसन स्टॉप हियर. तो कहता क्या है? मैंने कहा वहाँ जाना है. तो कहता क्या? मैं कहा सड़क. मैं कहा नो, you take me there, I'll give you this much money. मुझे अपने घर के cross the road and take me there. I said I cannot cross this road. But the one light नहीं कुछ नहीं. You have to just wait, and both the sides there's so much traffic. Things are better now. They're better now. I hope so. And I said light भी नहीं, मैं कैसे cross करूँगी? So then they used to laugh at me, but they used to take me there. So that's what I used to do. I love Delhi. Because I wasn't really born there, but I'm from there, and I lived in Delhi for a long time. I haven't lived too much in India, but most of the time it was in Delhi, whatever it was. Okay. I love Delhi. I used to go to, I worked there. I worked in the UN for a while. All right. Went to schools. J.D. Titler School, आपने सुना होगा नाम? Yes. I used to go there.
and Nice. I did a lot of things there. So Delhi is my heart is there, and I love Delhi. तो अभी किस दिन आऊंगी तो आपको जरूर दिल वाले तो दिल्ली के ही होते हैं जी। बिल्कुल तभी दिल की गल्ला भी करती हैं आप। दिल की गल्ला कर दी है दिल्ली वालों के साथ, ठीक है कि नहीं? दिल्ली वालों के साथ, हमारे दिल्ली यहाँ गल्ला विद दिल्ली वाला, वेरी नाइस। या दिल्ली वालों के साथ। तो दैट्स द थिंग। तो आप जब पढ़ते हो ये some whoever do you still have clients coming to you for this reading or Yes. how is it? Yes. Well, So I was made aware that a number of tarot readers in Delhi and Bombay have been using my cards for doing readings for clients, and which is very nice to know. The point is, people, when they need support and they need help, and wherever they can get the hand holding that they require, it's fine. I do. In fact, I do readings also from the Greek gods card till now, the mythical tarot pack. I do readings from there as well. And I'm in fact from this weekend beginning studying astrology now, because I realize, there is somebody is writing over here that there's no problem. I can send somebody to pick it up from you. Give me the address. Sure. And she said that Sushma ji कह रही है कि she used to live in the C block in GK1. देख लो कितना small world है. Block is next door to where I am. सुषमा जी Literally next door. अब वो हाँ अभी GK1 में हाँ तो तभी तो पिकअप कर लेंगे तो आप हमको भी डिलीवर कर देंगे, करेंगे. चलो आपका जो भी है relative is coming here, we'll work it out. I'll tell you the exact address and all. We'll do that. Sounds good. Sounds very good. That sounds good. तो मेरा एक और question था, like when people come to you, what kind of, like, it's a stupid question actually in a way, what kind of questions they ask you? Is it mostly family or अपने बारे में कैसा? And then through the cards you tell them the reading? Cards is one of the ways. The point is, people come because at some level they feel a little sense of relief by interacting with you. A physical interaction तो वीना जी एक ही चीज होती है. उसके अलावा ये ना connections, बड़े पुराने spiritual connections होते हैं लोगों के, वो automatically attract करते हैं लोगों को, and that is what draws people to each other. ना साईं बाबा कहते हैं अपने साईं सचरित्र में, बोलते हैं ऋण अनुबंध के कारण लोग हमारे जीवन में आते हैं. तो ये कहीं ना कहीं किसी से कोई लेखा जोखा बाकी होता है, तभी मिलना मिलाना होता है, और उसी के कारण कभी आप मददगार बन जाते हैं किसी के, कभी आपको कोई मदद कर देता है, कभी आप किसी को कुछ दे देते हैं, कभी कोई आपको कुछ दे जाता है. ये तो जीवन चलता रहता है. It's seamless. I agree. The intelligence that is running the universe is so vast and so intense that everybody reaches where they have to be at the time when they need to be there. So when people come, there are some people who come and just sit in silence and go. There are some people who just talk and talk and talk, and I listen. There are some who just sit quietly and I talk and talk and talk and they listen. Right? So eventually the point is that interaction should have made them feel marginally better than they were feeling already. And if they do, then they do come back and they do stay in touch. Okay. And the question it could start with, a question about मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं. It could be मेरी girlfriend शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है. There could be plethora of questions, right? It could be कि मुझे strange dreams आ रहे हैं. So depending on the discussion and as one spends time with the person, there is something one says at the physical level, but a lot happens at the etheric level just by the fact that the connection was made. Not everything is only how it seems. Right. जो जितना पौधा धरती के ऊपर होता है, उसकी जड़ कितनी गहरी हमें पता भी नहीं होता है. तो इसी तरह से उस इंटरैक्शन में किस चीज ने कितना काम किया, ये तो हम बता ही नहीं पाते. ये तो है. बाकी सब तो बहाने होते हैं. बिल्कुल ठीक बोला आपने. देखो राजश्री जी ने हमको बुलाया, कनेक्शन हुआ, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आप देखो सब पीपल आर लिसनिंग टू यू, एंड देन सुषमा जी कहती हैं नो प्रॉब्लम वीना जी, आपके लिए बुक भी ले आएंगे, हम पिकअप कर लेंगे. तो देखो बातों बातों में सी दैट्स द पावर ऑफ मीडिया. आई वुड से दिस थिंग connection, like you're in India, we are here, but connection to ho gaya na. So I always thank Zoom and Facebook for this connection that we are having.
पहले देखो कितने साल पहले तो ऐसी कुछ चीज होती भी नहीं थी, पेंडेमिक के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है मोस्टली। देखिए सनातन में जो सिद्धियां थी वो यही थी। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है और इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं तो हम वी नो लॉन्गर अमेज्ड बाय इट, राइट? बट a few years back, a few decades back, we would have been amazed at the possibility of something like that. जब फोन पे जब बात करते थे, वो जो एक कनेक्टेड रहता था एंड ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि केबल खींच के नहीं जा सकते, तब द पॉसिबिलिटी that there will someday be a connection that can be where you can see each other when you're talking to each other. We didn't think that was possible, right? It has happened, right? But सिद्धियां जो हैं, जो लोगों के पास we still have people, someone goes to someone for aura reading. What is that? कि वो सिद्धि है उसको, कि उसको आप जो naked eyes से normal लोगों को नहीं दिखता है, उनके पास वो एक कैपेसिटी है देख पाने की, और वो देख के बता पाने की कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है. So these things have always been in existence. Technology is just taking away the miraculousness of this thing, but they have always been in existence. You're right. It's just that now it's open. थोड़ा people can do it physically कर सकते हैं. Like if जैसे वो लिख रही हैं आशा जी, now we have Facebook extended family. That's true. अब Facebook के through extended family से भी like we all connected through that. Is like a family type situation. कि मिल सकते हैं बात. Because कई बार even in we're living in New York, but we get together on the Zoom. And जब pandemic के time पे mostly that time we started this thing, Zoom connection. Pandemic पैंडेमिक में शुरू हुआ, बिल्कुल पैंडेमिक बहुत शुरू हुआ, या पर एक बात है ना, पैंडेमिक ने जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट है वो भी तो एकदम से सिखा दिया, क्योंकि जो इन पर्सन मिलके जो एक तसल्ली होती है, जो एक पूरे जस्ट हगिंग अ फ्रेंड, hugging a child. I mean, I speak to my son every day through Zoom. My son is in the US as well, and he will also have chutti. Independence Day को भी मना रहा होगा. सब कुछ यूएसए में क्या होता है, where is he in USA? He's in Seattle. Oh, Seattle. Okay. हाँ. तो पर जब वो आया और उसको जब जप्पी पाई, उसमें जो सुकून है, of course it is, है ना. So the point is, हर चीज का एक बैलेंस होता है. And everything has its own importance. At some point, one can't say that this cannot replace the physical interaction. But on the other hand, because of this, एक sense of loneliness और एक sense of distance भी नहीं रहता है. So हर चीज के अपने अच्छाइयां हैं, and one has to just make the best of all that one has. Exactly. Make the best of the time and whatever you get. That's what I think. एंड ऊपर वाले भी यही कहते हैं, यू हैव टू आल्सो हेल्प योरसेल्फ. अगर आप खुद नहीं अपनी हेल्प करोगे तो कौन करेगा? इफ यू डोंट डू एनीथिंग एंड जस्ट मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जैसे कहते हैं यहाँ पे, आई मीन देयर मस्ट बी सम अदर वे ऑफ सेइंग इट, बट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स इन मेनी वेज. इफ यू डोंट डू एनीथिंग, मैंने तो यही जाना है कि बस गॉड ही हेल्प करता है. और कौन करता है? ये सोचे कि हम कुछ करते हैं तो सिर्फ हमारा अहंकार है, पर ठीक है, जब तक अहंकार है तब तक करना है, और जिस दिन खत्म हो गया फिर वो अपने आप हो रहा होगा, तो हो ही रहा होगा. बिल्कुल, आई एग्री. तो वही मैं सबको कहती हूँ, थोड़ा ट्राई तो करो, कुछ ट्राई करोगे तो तब भी कुछ होगा ना. अगर ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा? नथिंग इज गोना हैपन. एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है रमना महर्षि के साथ. कोई एक उनके डिसाइपल ने उनसे पूछा था कि मुझे खाना खाने के लिए, कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि जब आप कह रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा तो क्या भगवान खाना नहीं प्रोवाइड कर देगा? बोले हाँ, भगवान खाना प्रोवाइड करेगा. तुम अगर आए हो तो तुम्हारे लिए खाना जरूर प्रोवाइड करेगा, पर तुम कहाँ पे एफर्ट करना कहाँ तक एफर्ट करने से इनकार करोगे? तो अगर खाना मान लो थाली में परोस के भी भगवान ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया, तो थाली में से मुंह में अपने हाथ से लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? तो वो भी कोई और डालेगा. चलो वो भी किसी और ने डाल दिया, तो खुद चबाओगे कि नहीं चबाओगे? राइट. I know what exactly right. That's my point. कि खुद भी तो कुछ करो, पर खुद करते हुए भी ये रियलाइज करना होता है कि हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी. क्योंकि जैसे देखिए, ये पंखा चल रहा है, राइट? ये पंखा खुद नहीं चल रहा है, बिजली चला रही है. और एसी खुद नहीं चल रहा है, बिजली चला रही है.
तो वो अपना एफर्ट जो कर रहे हैं, वो एफर्ट जो हो पा रहा है वो इसलिए हो पा रहा है कि उसके पीछे चलाने वाली एक फोर्स है जो वो सब करवा रही है। बस ये फाइन एक डिफरेंस है, ये समझ में आ जाए सब समझ में आ जाता है। फिर हम कर्म भी करते रहते हैं और फिर कर्तापन का भाव भी नहीं रहता, विच इज वॉट द एसेंस ऑफ भगवद गीता इज। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। हमारे एक है नरेंद्र जी आते हैं, वो भी समझाते हैं हमको ऐसी चीज़ें। यू नो ही आल्सो डज दैट, भगवद गीता के इज अ स्कॉलर ऑफ दैट। तो यू नो एंड आपने ये भी आपने अभी अभी कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी शुरू करने लगे हो। सो द हाँ, मुझे बहुत डिफरेंट, इंट्रीगिंग लगता है वो सब्जेक्ट, तो मैंने कहा सीख ही लेते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स गुड, व्हाई नॉट। आपको भगवान ने बोला है कि लर्न, आई मीन आपको इतनी देखा उन्होंने, इतनी चीजें सिखा, यू नो यू लर्न योरसेल्फ बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांटेड टू डू एंड ऑफ कोर्स यू हैव मीना द जी, वो ना एक ना टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसलिए वो बहुत एडजस्टिंग होते हैं, वो बहुत हर चीज में, हर सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं। एज वी गेट ओल्डर ना, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है। अगर हम अपने अंदर एक ये भाव पैदा करें नई नई चीजें करने का और सीखने का, तो उससे वो बनी रहती है। पर डिफरेंस उसमें भी एक बहुत सटल डिफरेंस है। कई लोग इस चीज में इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग something that makes their life more harmonious, they start getting stressed about it कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उसके अलावा एक ईगो डेवलप होने लग जाती है कि मुझे तो इतना आता है, मैं तो ये भी कोर्स किया है, मैंने तो ये भी कोर्स किया है। तो वो फिर एटलीस्ट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये सब नया कुछ सीखना, नया कुछ करना, बहुत कुछ करना, ये दो धारी तलवार है। ये बहुत अच्छा भी है, पर अगर इसमें अगर मैं का भाव फंस गया ना कि ये मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो फिर वो ईगो, कचड़ा हो गया। वो ईगो आ गई ना बीच में। हाँ, फिर वो ईगो में, कचड़ा हो गया। और हाँ वो तो स्पिरिचुअल है। ईगो जहां आ जाती है ना, वो सबसे खराब वाली चीज है, क्योंकि उसको लूज करना सबसे मुश्किल है। वो इतनी सटल तरह से अपने आप को एम्फेसाइज करती है कि उसको अनलर्न करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सारी दुनिया को दिखाई दे रहा होता है कि कौन से ट्रिप पे है, बस स्वयं को पता नहीं चलता कि कहाँ से पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक बात है, ठीक बात। ऐसे लोग, उनको पता नहीं चलता कि वे आर व्हाट दे डूइंग, व्हाट दे सेइंग, पर अपना ही अपना करते रहते हैं। मैंने ये किया, हाँ, वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट टू। वो तो है। ये को लिख रही है, कमलेश जी लिख रही है, अनु जी कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी इफ वी हैव ए क्वेश्चन। बट कमलेश जी अभी सीख रही हैं वो, बट मे बी शी कैन सीखना शुरू करने वाली। करना है अभी शुरू। बट उसमें मैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड द टैरोट कार्ड रीडिंग, का फर्क होता देखिए, है? एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही प्रिसाइज साइंस है एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। बहुत प्रिसाइज साइंस है एंड बहुत एंशिएंट साइंस है इंडिया में, भारतवर्ष में। मतलब अभी तक, और सबसे खूबसूरत चीज है जो हमारी उपनिषदों की कहानियां वगैरह है ना, वो किसी बहुत जबरदस्त एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को समझाने का तरीका है। जैसे अभी एक सेशन अटेंड किया था मैंने, उन जेंटलमैन का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, जब आएगा मैं बता दूंगी। तो उनका मैंने सेशन रिसेंटली जाके अटेंड किया था। तो जो एक बहुत पुरानी कहानी है कि सूर्यदेव की जो पत्नी है, वो उनका तेज सह नहीं पा रही थी और वो चली गई थी छाया को अपनी जगह छोड़ के। और फिर उसके बाद सूर्यदेव, इवेंचुअली सूर्यदेव का तेज थोड़ा कम किया गया था। तो वो जो कहानी है और जिस पीरियड की वो कहानी है, जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज एक्चुअली अबाउट द इवेंट्स दैट हैड हैपेंड सेंचुरीज बैक। सो आई वाज कंप्लीटली, ये जो सनातन धर्म की जो कहानियां हैं, वो साइकोलॉजिकली, सोशली, ह्यूमन एनाटॉमी को लेकर, एस्ट्रोनॉमी को लेकर इतने सारे गूढ़ उसमें ज्ञान घुसा हुआ है अबाउट दिस। तो एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में इट हैज बिकम लाइक पीपल, some people would even look down upon it कि अरे आप सुपरस्टिशियस हो, आप इन सब चीजों को मानते हो। But actually it is a very refined and very highly developed science, which of course it is true that a lot of people are abusing also। राइट, क्योंकि देख, जो जाता है किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके, चाहे वो टैरो रीडर हो, चाहे वो सूदसेयर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे
किसी तरह का हीलर हो, जो भी जाता है ना, वो अपनी एक वल्नरेबिलिटी को जाके एक्सपोज कर रहा है ना, क्योंकि वो कष्ट में है और वो वल्नरेबिलिटी अपनी एक्सपोज राइट कर रहा है। तो उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए बड़े लोग दुनिया में हर प्रोफेशन में तैयार रहते हैं, डॉक्टर्स में भी तैयार रहते हैं। आई गॉट टू नो रिसेंटली अबाउट समबडी जिसने ऑर्थोपेडिक के पास गया था और उसने सर्जरी करवा के अंदर रॉड डलवाई है, बाद में एक्सरे में पता लगा कि रॉड तो डाली ही नहीं। तो इस तरह के भी लोग हैं, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो फायदा उठाते हैं, हर तरह के दुनिया में हैं लोग, राइट। बट एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस इज कंसिडर्ड very refined and very precise. So, which is why I'm trying to learn, because I want to understand it deeper. Because if you notice, one of the things that I do is I decode the ancient wisdom in the modern context. अगर आप YouTube पे जाएंगे तो जैसे शनि के बारे में कहानी मैंने सुनाई है, शनिदेव के बारे में मैंने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई है और उसका पर्सपेक्टिव मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो दिया है। अगर आप जो हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं अभी नवरात्रि, आषाढ़ के नवरात्रि जब खत्म हुए, गुप्त नवरात्रि खत्म हुए, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो उसमें जो सारी कहानी है वो हमारे चक्रों के बारे में। तो एक जो हमारे एंशिएंट लोगों ने अलग अलग तरीकों से हमारी, जैसे एक फिजिकल एनाटॉमी तो हम सबको मालूम है, वो हमने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ी है, बट हमारी एक एथिक की भी एक एनाटॉमी है, हमारे एथिक के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिस हिसाब से वो फंक्शन कर रहे हैं। और कुछ चीजें करने से कुछ होता है, जैसे कुंडलिनी जागरण करने का तरीका है, ध्यान किसी तरह से करने का, कुछ समाधि में जाने के कुछ प्रोसेसेस हैं। तो ये सब जो उन्होंने सिखाया है बहुत उस समय के कॉन्टेक्स्ट में, उस समय के एग्जाम्पल्स लेके सिखाया है। तो आज की तारीख में भी वो सब, वो नॉलेज तो उतनी ही रेलेवेंट है। बस मेरा एफर्ट ये होता है कि एक सीधी सादी भाषा में जिससे हम रिलेट कर सके उस तरह से समझाऊं। जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेके मैं आप कई लोग मुझसे पूछते थे कि आप बिलीव करते हो इन चीजों में। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप डॉक्टर के पास जाते हो कि आपको बॉडी में ना बहुत ढीलापन है, यू फीलिंग लेथार्जिक, यू फीलिंग वेरी टायर्ड, एंड यू गो टू अ डॉक्टर एंड the doctor gets blood works done, right? And when the blood works come back, they say you are anemic. Then they do certain other tests to find out the anemia is coming from where. Is it because you are low on iron? Is it because you're low on vitamin C? Whatever. And then they will prescribe you some supplements, vitamin C के supplements, iron के supplements, कि थोड़ी देर के लिए आपको उससे थोड़ा respite मिल जाएगा, symptomatic relief. बट इवेंचुअली तो देखो से तब भी उन्होंने पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो गया, स्प्लीन मैल फंक्शन कर रहा है, कुछ अंदर कोई इन्फेक्शन है जिस कारण से इस तरह से हो रहा है। इवेंचुअली तो गुड हेल्थ विल कम फ्रॉम गुड लाइफस्टाइल एंड गुड न्यूट्रिटिव ईटिंग, गुड फूड, राइट, उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि जो भी आपका चार्ट देख के कि आपका अच्छा ये चीज वीक है, इस चीज में प्रॉब्लम है, आपको वो कुछ उपचार बता सकते हैं कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, आप ये चैंटिंग कर लीजिए, आप ये दान कर दीजिए। पर इवेंचुअली तो जब आप तक अपने कर्म नहीं सुधारेंगे हम और अपना कार्मिक पे बैक नहीं कंप्लीट करेंगे तो रिस्पाइट तो मिलेगा नहीं, फुल लास्टिंग रिस्पाइट तो तभी मिलेगा ना। सो दिस कंपैरिजन, it helps you think of astrology beyond superstition and it helps you understand कि अच्छा, अब जब तक जो डॉक्टर नहीं है, आपको याद होगा हमने स्कूल में पढ़ा था जब जिन्होंने मलेरिया के लिए कुनीन डिस्कवर किया था, वो जब लोगों से जाके ब्लड सैंपल मांगते थे तो लोग उनको मारते थे क्योंकि उनको लगता था ये ब्लैक मैजिक करेगा, ये मेरा खून लेके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, तो क्योंकि वो उनके जो उस समय की समझ थी उसके हिसाब से ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो हमारी आज की जो समझ है अपने बारे में सिर्फ इतनी ही अगर रहेगी कि हम बस ये फिजिकल बॉडी हैं, तो फिर हमें ये सब सुपरस्टिशन ये सब लगेगा। मगर अगर हम समझेंगे कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन कनेक्ट and relate to each other in ways more than what is visible to us when we look at each other. So then we, what the mind earlier was not willing to accept, now the mind will be willing to at least consider those possibilities. Correct, that's true. And then एक और भी क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये कमलेश जी पूछ रही है,
I don't know if are you able to answer questions through tarot card reading? How far is it correct? जी प्रयास तो होता है. हाउ फार इज इट करेक्ट का देखिए आप 100 में से 100 नंबर तो मैथ्स में भी सबके नहीं आते है ना. तो कुछ 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 हिस्सा तो ऐसा कुछ, और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा भी नहीं हर बार लेके आ पाता है ना. तो 100%. कुछ हिस्सा तो इसका ये है कि पूछने वाले के कर्म में उसको वो जवाब मिलना उसके हिस्से का है कि नहीं है. ठीक है. कुछ हिस्सा इसका है कि जिसके पास गए हैं उसकी अपनी इंट्यूटिव कैपेसिटी इतनी डेवलप्ड है कि कार्ड्स तो सही बोलेंगे पर उसको इंटरप्रेट करने वाला उसको सही ढंग से इंटरप्रेट कर पा रहा है कि नहीं, वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है. जैसे सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत साल पहले मैंने किसी के लिए टैरो रीडिंग की थी. तो उसके कार्ड में आया था कि उसके लाइफ में एक यंग एनर्जेटिक मेल की एंट्री होने वाली है. ठीक है. तो वेरी वेरी गुड लुकिंग गर्ल, मैरिड एंड वेरी हैप्पी. तो एंड गुड फ्रेंड्स वी आर. तो वो ना फ्लिपेंट से उसमें मैंने कहा यंग एनर्जेटिक यंग मैन, यू नो, मैन की एंट्री होने वाली है इन योर लाइफ. एंड आई लाफ्ड, आई सेड व्हाट, यू गोइंग टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग. तो मैंने इस तरह से मजाक किया उससे. एंड शी सेज व्हाई, इट कुड आल्सो बी दैट आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय. आई सेड हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, राइट, कुड बी. And sure enough, I think a few weeks, 2 or 3 weeks later, we discovered that she is pregnant. And she did have a baby boy who's a young lad now, right? So, cards ने तो बताया था. अब मैं, क्योंकि my relationship with her and also whatever space that I may have been in, interpreted it as having an extramarital affair. And she, because of the space that she was in, right? Because she's also a sadhika. तो वो खुद बहुत अपनी उसकी साधना बहुत जबरदस्त है. तो उसकी इंट्यूटिव कैपेसिटी थी कि अरे हो सकता है मैं मां बनने वाली हूँ, मेरा बेटा हो. She didn't know till then that she was pregnant. She wasn't aware of it. She got to know a few weeks later that she was pregnant. So it was true. Whatever you said, सच्चा निकला. इंटरप्रिटेशन तो कार्ड ने सच बोला था. कार्ड ने सच बोला था. मेरा इंटरप्रिटेशन सच नहीं था, उसका इंटरप्रिटेशन सही था, है ना. तो उसके कमलेश जी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं सही जवाब देती हूँ कि नहीं देती हूँ. वो तो जवाब जब मैनिफेस्ट करेगा तो पता चलेगा कि सही है कि नहीं. हाँ, उसमें 100 में से 100 नंबर तो नहीं आते, ये तो मैं बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ. आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, जैसे आपने बोला अभी, उसको बोला कि ये कार्ड्स में आया है. देन जैसे उसने she took it because she put it according to what is her, because she's not going to have enough. उसको मालूम था कि मैंने कोई अफेयर फूल तो करना नहीं है. तो उसका यही था कि मेरी शादी हुई है, मेरा कोई फ्यूचर में बच्चा होने वाला है. So she took it, she interpreted in her own way, which was the correct way to do it. So आपको कमलेश जी, same thing applies to you. When if you get a reply, you have to see what is your situation and how it apply to you. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मैंने ना हमारा बुक फेयर लगा था कुछ साल पहले, तो अपना बुक का हिंदी वर्जन वहां पे लॉन्च किया था. तो वहां पे somebody was looking at the stall. कभी कभी मैं जाती थी, तो एक दिन मैं जब मैं गई तो जो स्टॉल हैंडल कर रहा था उसने कहा अरे मैडम आ गई हैं जिन्होंने किताब लिखी, आप उन्हीं से अपना सवाल पूछ लीजिए. तो जो वहां पे खड़े हुए थे कस्टमर बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, वैसे कमलेश जी पूछ रहे कि क्या आपकी ये किताब लेने से मुझे जवाब मिल जाएगा. तो मेरा उनसे ये कहना था कि जी देखिए, अगर आपके अंदर तैयारी है ना जवाब पाने की, तो गाड़ी चलाते हुए होर्डिंग से भी आपको जवाब मिल जाएगा. ठीक है. It is to do with the level of preparation and receptivity you have in you. You will get an answer from there also. So for that, you do not need to take my book and go. So in fact, जो लड़का बेच रहा था वो थोड़ा नाराज हुआ था कि मैम आप अच्छे हो यार, आप किताब खरीदने के लिए कोई खड़ा हुआ आप ऐसे बोल देते हो. ऐसे नहीं, बट आई कैन नॉट लाई फॉर द सेक ऑफ 1000 रुपीज ना, कि मैं झूठ बोल दूं. बिकॉज इवेंचुअली तो जब कोई भी जाता है किसी के पास, देखिए जो गुड हेल्थ में है ना, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं. डॉक्टर के पास वही जाएगा जिसके अंदर कोई अनरेस्ट है, कोई फिजिकल, कोई मेंटल, कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहा है. तो उसको अगर डॉक्टर कहे कि तुम क्यों नहीं अपने आप दवाई खा लेते, तो वो तो सही नहीं है. सो दिस इज समथिंग. सो अब गए हैं किसी के पास सवाल पूछने के लिए, तो आप अपने आप को पहले सेटिस्फाई करके जाएं कि हम जिसके पास जा रहे हैं ये रिलायबल है कि नहीं है. और जब गए हैं
उसके बाद उसका भी फर्ज बनता है कि आपकी रिसेप्टिविटी को वो आपको रीअश्योर करे और आपको और रिसेप्टिव होने की स्थिति में लाने का प्रयास करे. सो आई डोंट डू जस्ट टैरो रीडिंग, आई आल्सो डू काउंसलिंग. या यस लिखा हुआ है. Right, so it is a combination of the tarot could be something that is a tool, but the tool has to be eventually जो है वो तो आपका well-being है ना, that is the most important thing. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने ये भी आपने ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था. जैसे आपने your message is very simple. The outer world is a reflection of our inner state, and it takes a deep inner work to bring about harmony and well-being in our lives. And you facilitate and support this inner work through various systems and processes from yogic asanas and pranayams, mantra chantings, and neuro-linguistic programming techniques. अब वो क्या है थोड़ा इसका NLP. तो देखिए क्या है ना, अब अगर अब 1 मिनट के लिए मैं बोलूं इमली, कुछ ट्रिगर हुआ माइंड में ना, जहां इमली खाई होगी चाहे प्रेगनेंसी में या कॉलेज में, तो उससे रिलेटेड कुछ कहीं पे सलाइवेशन हो गई होगी, कोई थोड़ी सी आंखें चमक गई होंगी, कुछ याद आया होगा. एक जस्ट द वर्ड has created a certain, वो न्यूरॉन्स ने उस एक्सपीरियंस को लेकर एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया. तो अब इसी तरह से कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये सुन के मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाता है. राइट, इसी तरह से कुछ बातों पे अगर आप जब मालूम होटल मैनेजमेंट में जब शुरू में जब जो कॉल सेंटर पे उनको ट्रेन करते थे ना, फोन उठा के गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, उनको साथ में स्माइल करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि अगर आप स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, आप ग्राउची हो ही नहीं सकते. यू कांट साउंड ग्राउची. That's funny because when I talk to somebody on the phone, I'm always smiling. So my husband कहता है, why? मैं कहा, I don't know. It's just a natural thing. That is when you get the tone and tenor of your voice will be welcoming, reassuring. Yes. Right? So the understanding all this, so इन चीजों से आप किसी मेमोरी का जो आपके ऊपर होल्ड है, किसी बैड मेमोरी का होल्ड है, उसको कम किया जा सकता है. किसी पॉजिटिव मेमोरी से, देखिए पानी में अगर आपने नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, आपने नींबू ज्यादा डल गया, अब उसको निकाला तो जा नहीं सकता, पर उसमें चीनी और घोल सकते हैं और पानी और डाल सकते हैं. तो एनएलपी वैसी चीज है कि आपके अंदर कुछ है इस चीज का. इवेंचुअली व्हाट वी ट्राइंग इज कि हमारा सेंस ऑफ वेल बीइंग शुड बी देयर. राइट, तो उसको किस तरह से, so there are various techniques wherein you can, some people have bad dreams, some people have anxiety, one can find out, you know, जो uncomfortable emotions है उनके साथ कैसे डील किया जा सके. तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं and they really help people. That's good. This is what it is. Very interesting too, because you're right. Like something जैसे अभी एग्जांपल दिया, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने इमली का. किस में कुछ और फीलिंग होगी, मेरे में तो डिलिशियस. आई लव इमली, है ना, मीठी. ओ माय गॉड, दही के ऊपर डाल के किस एनीथिंग, दही भल्ले के ऊपर मुझे वही आ रहा है, दही भल्ले का कब अब तो सलाइवा फिजिकल में सलाइवेट कर गए होगे. और टेस्ट कर मुझे बड़ा अच्छा लगता था. आई एम थिंकिंग कब मैं खाऊंगी ना, यू नो. सो एवरीबॉडी, some people say nah, they don't like it, you know, they don't like imli. But you're right, that brings actually some thoughts or some things somebody says or does that triggers something inside of you, and उसमें पता नहीं क्या हो जाता है. हमारे जो ancestors कोई वर्ड भी हो जाए नहीं, उसमें ट्रिगर होता है एकदम कुछ ट्रिगर, something can trigger inside of you. That is just one thing that people should know how to control. ये बड़ा, ये भी होता है, कैसे कर सकते हो ये? It's not just about control. So basically बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. देखो, मंत्र चैंटिंग is one of the most powerful things in the world, I say. Why do I say that? कि आसन हुआ, प्राणायाम हुआ, मेडिटेशन हुआ, ये सब आपको खुद को करना पड़ता है. मंत्र ऐसी चीज है कि आप सिर्फ उसको सही उच्चारण वाले यूट्यूब पे लगा के सुनते भी रहोगे ना, आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस उसके कारण से आने लग जाएंगे. अब देखिए ओम है, ठीक है, इतना पावरफुल है वो कि रिसर्च वगैरह करवाई उसके ऊपर, साउंड के ऊपर. आई थिंक एम्स में यहाँ दिल्ली में रिसर्च हुई थी. तो आप देखिए, जब हमें
दर्द होती है, ठीक है, कुछ भी, किसी को चोट लगी, कुछ जल गया, तो कौन सी आवाज निकलती है? आई, ऊ, ऐसी आवाजें निकालते हैं ना, तो सारे वॉवल्स निकलते हैं, ठीक है। वॉवल्स क्यों निकलते हैं बॉडी से, ये साउंड क्यों निकालती है बॉडी? क्योंकि इससे बॉडी में पेन किलर रिलीज होता है, इस साउंड से बॉडी में पेन किलर रिलीज होता है, इसलिए जब दर्द होती है तो हम ये साउंड्स निकालते हैं। Wow. अब दूसरी चीज, जब दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, जो भी है, क्या साउंड है? कंजन कॉन्सोनेंट्स। और ओम है, वो क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वॉवल एंड कंजन साउंड कॉन्सोनेंट। आ, उ, म का कॉम्बिनेशन है, टू वॉवल्स आ और उ और म, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ओम। तो मतलब जब ओम चैंटिंग करोगे या सुनोगे तो बॉडी में आपके पेन किलर भी रिलीज होगा, और जो हार्मोन आपको काम करता है, इंटरल्यूकिन बोलते हैं शायद उसका, नाम भूल गई हूँ मुझे, जो आपको काम करता है जिस तरह का, वो रिलीज होगा। दोज काइंड ऑफ हॉर्मोन्स विल बी रिलीज इन बॉडी। तो आप सोचो, सिर्फ ओम चैंटिंग करके आप कितने स्टेबलाइज हो जाओगे। ओम इज वेरी वेरी पावरफुल, मतलब सब जगह में योगा करते हैं तो लाइक चैंटिंग करते हैं, इस ओम करके करते हैं ना, है ना? do that, अब yeah. देखिए, अभी अगर हम ओम करेंगे तो यहाँ की एनर्जी भी बदलने लग जाएगी। करना चाहेंगे? Let's do it. आप अपने घर में सब करो, all our friends who are here. मैं यही बता रही हूँ कि मंत्र ऐसी चीज है कि सिर्फ करो नहीं, सुनो भी तो उसका असर होता है। तो है। बाकी सब आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ओम करते, ओम को सुन के भी असर होता है। जितना करके होता है शायद उतना ना हो, पर सुन के भी असर होता है। तो इस तरह से जो हमारे मंत्र हैं वो इतने अच्छे, इतने पावरफुल हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम अगर रोज सुबह उठ के सुनेंगे तो बॉडी में एनर्जी आ जाएगी दिन को डील करने के लिए। और ललिता सहस्त्रनाम अगर सुन के सोओगे तो वो रिलैक्स कर देगा और नींद ज्यादा अच्छी आएगी। मतलब इतने हमारे, इसीलिए हर मंत्र का एक समय होता था, हर एक के साथ एक प्रोसेस इन्वॉल्व था, बिकॉज दे अंडरस्टूड व्हेन व्हाट शुड बी डन, सो दैट अब आपको जब सोने का टाइम है उस वक्त आप कुछ ऐसा सुन लोगे, जैसे बोलते हैं ना, रात के टाइम बैठ के हॉरर फिल्म मत देखो, नींद नहीं आएगी, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग यू, राइट? सो सिमिलरली जो हमारे एंशियंट्स हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सनातन धर्म, ये जो एक खान है ये ट्रेजर की मंत्र जो है, तो अगर इनका ठीक से उच्चारण किया जाए तो बहुत अच्छा। अगर उच्चारण होता नहीं है, सिर्फ सुना भी जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर करता है जीवन पे। अभी ओम करके देखते हैं। ओम। ओम। ओम।
मैंने बस 3 बार किया अभी. That's I know I'm listening. सुना, सब सुन रहे होंगे. Everybody heard? All of you? Yeah, they all are कुछ there. महसूस हुआ किसी को? अभी चुप है सारे, कुछ नहीं कहा, लेकिन सुन, उन्होंने सबने सुना होगा डेफिनेटली. बहुत अच्छी बात है, चुप है तो मतलब साइलेंस हो गई. यस. अब देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी तक मैं बात कर रही थी जिस टोन और जिस वॉल्यूम पे बात कर रही थी, और अब बात कर रही हूँ, फर्क हो गया मेरा 3 बार ऑन करके. Yeah, you're right. सुषमा जी कह रही yes. तो I mean very बहुत ही अच्छा लगा आपको मिलके and to hear all these things. पता सब कुछ होता है like you said, but जैसे आप बात करते हो या कुछ से सुनते हो तो उसका इफेक्ट डिफरेंट तरीके से लाइफ में पड़ता है. रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं हम सबको, माइंडर्स चाहिए होते हैं, हम बिल्कुल. सबको चाहिए होते हैं. वो कल्मेश जी लिख रही है, ब्यूटीफुल सेशन, ग्लैड यू ब्रॉट सच ग्रेट टॉपिक एंड वेल डिस्कस्ड बाय अनु जी. इट वाज समथिंग डिफरेंट बट वर्थ लिसनिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव. ओके, मेरी तारीफ कर रही हैं, थैंक यू. नो, आई एम जस्ट अ मीडियम पर्सन. राजश्री ने मुझे बताया, उन्होंने बताया राजश्री जी ने, और आपको लेकर नो उनको मैं लिखती हूँ, मैं क्या गेट समबडी कैन यू रेकमेंड सम, तो फटाफट फिर वो आपका नाम उन्होंने बताया. कभी एक दो पहले हुई तो 3-4 लोगों को बताया था उन्होंने. So I'm sure you might be knowing them. Maybe you're in the same circle. Himanshi, you know that? Himanshi and I don't. or with the I forgot her name, but a couple of people. Okay. कोई ना. Very nice. Thank you so Ramaji Vatsala. Tyagi is here watching. Oh, She is, Vatsala is my friend. so your friend, that's what I thought. So आपके friends अभी उन्होंने लिखा तो नहीं, but maybe they must be watching. If they watch the, अगर इसमें आई हैं तो. Vatsala is a yoga instructor, a very good one. Does she do the चेयर के बच्चों को योगा करते हैं कि मैट्स के ऊपर करते हैं? समटाइम दे डू द फॉर द हाँ, सीनियर्स. जरूरत पड़ेगी तो चेयर पे भी करा देगी, दैट डिपेंड्स. मतलब ये सब तो वो भी, उनको भी बुलाएंगे किस दिन. बिल्कुल, शैली इसीलिए जी, बता रही हूँ, वो योगा इंस्ट्रक्टर, आप कभी उनको बुला सकते हैं. Oh, but Salah said, I'm very much here. Thank you so much that you're here. You just okay. We're glad to see you here. And आपको भी बुलाएंगे हम यहाँ पर दिल दियां गल्लां सबके लिए खुला. It's open for everybody. We are, and thank you so much Shali ji, Rama ji, Kamlesh ji, Sushma ji, and Asha ji, and Anil ji, Vinod ji, Shashi ji, Shashi Danda is also here. Thank you. And of course Asha ji मैंने बोला है अभी, and Anjum, Ifti is here. Thank you all of you for joining, and I'm so happy that you could get listen to this. And Anil ji is here. Thank you all of you for listening to this session. It's so informative. So Anu ji को तो जरूर फिर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि we just touched just a small point, and she has so many different things to discuss and talk and tell us, and from where we can learn so much. Ramaji, thank you so much, and Vatsala ji, very nice to meet you. Thank you so much for joining Dil Diyan Gallan. And आपको भी मिलेंगे और आपका एड्रेस भी लेंगे. सुषमा जी को मैं भेजूंगी. आप मुझे मेल कर सकते हैं annu@annukalra.com. ANNU. नहीं, इसी में व्हाट्सएप में मुझे अपना एड्रेस मैं आपको भेज दूंगी. हाँ, लेकिन वो भी पिकअप चाहिए, कर लेकिन लेंगे. मेल टू मी, नॉट एन इश्यू. या एंड देन I'm going to tell सुषमा जी, कहते हैं she'll pick it up for me. तो वो अब उनका अरेंजमेंट होगा कोई आने वाला तो भेज देंगे वो. So we'll talk about that, and thank you so much all of you for joining again. Once again, have a beautiful day. Vatsala must be in India too. She must be there. Yeah, Vatsala is in India, yes. So all of you right here in Chicago, New York, and have a wonderful day. Let me do a mantra to close Yes, it. yes, please. Yeah? Yes, sure. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhag Bhaved. Om Purnamadav Purnamidam Purnarth Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Thank you so much. Thank you so much, Rama ji, and thank you आपको इतनी अभी प्रे करने के लिए, and that was really
it feels so good when after listening. Beautiful session. Yeah, कमलेश जी लिख रही है, मैं आपकी एक सेकंड फोटो लेती हूँ, मैंने फिर आपको आपका एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं फिर सुषमा जी को भेजूंगी. Yes, here it goes. And so keep on coming, come again. And अभी जाना नहीं आपने, अभी मैं यहाँ बंद करती हूँ सबको. So bye everyone. Come back here on Wednesday, same time, same place. I'm going to try to bring somebody interesting. Okay, thank you. And आपको मालूम है शुक्राना होता है Friday को, and Wednesday I'm trying to get someone here on this next couple of days. Thank you. Okay.